everyone, I hope you are all in well condition. Today's topic of our discussion is transition and associated properties. What are the properties when a polymer changes states? Polymer change from one state to another. There is a gradual change in its physical properties. It means that जब एक पॉलीमर एक स्टेट यानी कि सॉलिड टू अनदर स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तब्दीलियाँ आती हैं. Among many properties, the significant property which affect the polymers is about volume change. The specific volume change is used to determine the transition temperature of polymers. Many other physical properties like density, specific heat, dielectric constant also show changes at transition points. Transition point is that point when one state is changed to another state. Now in next slide we will study that how we will measure the specific volume of a polymeric sample. The change in specific volume of a polymeric sample with temperature are measured using a dilatometer. Dilatometer, there is a graduated capillary tube, confined liquid and sample are required for the measurement of specific volume change. Now first of all there is a bulb in the instrument. In this part of instrument put our sample in it along with a confined liquid and then it can be heated or cooled to measure the change in volume of sample with temperature. Now what do you mean by confined liquid? A confined liquid is that type of liquid in which all the molecules are arranged and closely packed as shown in the diagram. के पार्ट में सैंपल और कन्फाइंड लिक्विड को डालेंगे, उसको हीट अप करेंगे, देन कूल करेंगे और जो टेम्परेचर के लिहाज से वॉल्यूम में चेंज आया उसको मेजर करेंगे. नाउ हीट करने पर जब सैंपल एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करेगा देन जो कन्फाइंड लिक्विड बल्ब में मौजूद है वो डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगा. इसका मतलब है कि कन्फाइंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक थे अब वो करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे. डिस्प्लेस्ड को हम लोग मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब को हम लोग यूज़ करेंगे टू चेक और मेजर दैट हाउ मच लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड and it will be the volume change. Now if we will study that what is the volume change in low molecular weight crystalline solids. When a low molecular weight crystalline solid melts into a liquid, the change of state is characterized by its dynamic variables and one such variable is the specific volume. इसका मतलब है कि जब molecular weight crystalline solids melt करते हैं तो वो चेंज होते हैं लिक्विड में and there is a state change and state change is due to its volume change. Now if we take a sample of crystalline solid in a dilatometer and measure its volume change with respect to temperature, then we will get a plot and the plot is in between temperature and volume change. Temperature is on x-axis and volume change will be on y-axis. Now if we will see the graph, we show an abrupt jump in the volume change of material indicated by the line BC and this abrupt change occur at specific volume at temperature Tm which is the melting temperature. Now firstly if we will see the line AB, then this line show that when a solid started heated it melts slowly and there is small but steadily increase in its volume. इसका मतलब है जब हम लोग स्टार्ट में सॉलिड को मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे, हीट देंगे, देन वो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा बट नॉट अब्रप्ट. वो स्लोली चेंज करेगा अपने वॉल्यूम को और स्लोली सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा एंड उस वक्त तक स्टडीली इंक्रीज होगा जब तक कि वो मेल्टिंग टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए. व्हेन इट रीच at melting temperature then there is a sharp increase in volume and the solid is changed into liquid state and this change will indicated by line BC. Now when the whole sample will be melted and temperature is further increased, पूरा सैंपल जब मेल्ट हो जाएगा देन हम उसको और टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे. इंक्रीज टेम्परेचर करने की वजह से देयर इज अनदर स्टडी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. Of the liquid will increase steadily again as indicated by the line CD. Now if we will see that the line that show AB and CD are both at steady increase of temperature but the line CD is higher as compared to the line AB. This is due to volume coefficient of expansion. Now what is the volume coefficient of expansion? It is the increase in volume of solid on heating.
मतलब जब हम लोग सॉलिड को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो मेल्ट होता है और मेल्ट होने से उसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ आता है। इस वजह से जो द लाइन सी डी है उसको वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द लाइन ए बी ड्यू टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। It's all about today's lecture. If you like my video then please subscribe and like my channel. Thank you.